जब बच्चे को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय हम उसके लिए अवेलेबल हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फ़ील क्या कर रहे हैं? ज़ुकाम भी हो रही है, लेकिन फ़ील क्या कर रहे हैं आप? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच इज़ टू बी डन इज़ टू लिसन देम। वुमेन है, वो कम्युनिटी का वो हिस्सा है जहाँ वो बहुत सुनी ही नहीं जाती है। अभी पेरेंट्स दे डोंट हैव टाइम फॉर चिल्ड्रन, whereas they are spending a lot of money, they are giving them facilities, with gadgets they are providing, but where is the time? बच्चों को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स है या मेरी फैमिली है या मेरे फ्रेंड्स हैं जहां मैं खुलकर बात कर सकता हूँ और वो मुझे सही समझेंगे, मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे। व्हेन पर्सन इज एडिक्टेड, उसका अपना माइंड ही नहीं रहता है। सो दोस 15 किड्स आफ्टर परफॉर्मिंग दे सेड, मैम वी विल नेवर ट्राई एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस। जो ऋग्वेद है उसकी आखिरी ऋचा है, इट गोज लाइक संग छद्वम संवदध्वम संभु मनांसी जानताम। मिलकर चलें, मिलकर सोचें और एक दूसरे के मन की बात को जानें। कहते हैं कि डॉक्टर सिर्फ दवा नहीं देते, भरोसा भी देते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सिर्फ लोगों का इलाज नहीं किया है, बल्कि उनके मुश्किल सफर में उनका साथ दिया है। So today we have with us doctor, researcher and de-addiction warrior Dr. Sadhana Sharma, जिन्होंने लोगों को अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने को एक हौसला दिया है। So today with another episode on Safar Baaton Ka, we have with us Dr. Sadhana Sharma. So today we'll be talking about addiction. So addiction is something that doesn't knock the door, it just slides in. People go into substance abuse, they feel that they will de-stress themselves अगर वो substance abuse में जाएंगे, drugs, alcohol में जाएंगे। हमें ऐसा लगता है that as a society addiction creeps in, वो धीरे धीरे किसी इंसान में आता है। So this shows that there are certain myths regarding to addiction. We do not feel that it gives you hints first. So what are those myths associated जिन्हें हमें दूर करना चाहिए? See, addiction शुरू में ये यूज से शुरू होता है। से लाइक हमें एडिक्शन चाय का भी है, हमें कॉफ़ी का भी है। इसी तरह से कुछ भी नया, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, जैसे बच्चा गिर जाता है, रोता हुआ माँ के पास आते तो हम कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो जाओ, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा या आपको ये काम तो करना ही होगा। तो हम वहाँ उसे समझ नहीं रहे हैं, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो इट्स actually starts with understanding. We don't understand the person, we don't realize what he is going through or what is happening. जब हम उसको समझ नहीं रहे हैं, उसकी बात को नहीं समझना चाहते हैं, तब उसे कुछ और सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, किसी और चीज़ की तरफ उसको जाने का मन करता है, झुकाव होता है। सो इस तरह से वो इनिशियली आपको इंडिकेशन देता है और उस समय हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हर छोटी छोटी चीज़ों का। वी शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग वेयर देयर इज एनी चेंज इन द पैटर्न और बिहेवियर और इट्स लाइफ स्टाइल। सो वी शुड एड्रेस, बिकॉज हम जो क्लोज वंस हैं, द लव वंस हैं, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, विच यूज टू बी इन आवर फैमिलीज, जो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज और मैनी मोर थिंग्स हैज़ चेंज्ड, यू नो। सो व्हाट आई रियली फील, इट इज़ as much as essential, जितना हम उनको फिजिकल नर्चरिंग करते हैं उतना ही इमोशनल भी ज़रूरी है। तो डज एडिक्शन मीन कि सिर्फ अल्कोहल, ड्रग्स? आज की मॉडर्न सोसाइटी के नए काइंड ऑफ एडिक्शंस भी आई फील आ गए हैं, चाहे हम वर्कहोलिज्म लेते हैं, लाइक 70 hours a week you have to work, the recent controversy, या फिर we talk about the phone addiction. तो how to deal with all that? और मॉडर्न सोसाइटी में ऐसे और कौन से एडिक्शंस प्रिवेल कर रहे हैं? ये जस्ट as you said, like you know, social media validation and everything, ये सब भी एडिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। बच्चों का कोविड के साथ ही शुरू हुआ होगा फ़ोन, डिजिटल गैजेट्स को ज़्यादा यूज़ करना, बट देन ग्रेजुअली वी डिड नॉट विड्रॉ इट। सो एडिक्शन प्रॉब्लम जब होता है जब वी कैन नॉट विड्रॉ इट, उसके विड्रॉल्स हम नहीं कर पाते हैं, हम कोप नहीं कर पाते हैं। सो ये सब भी मॉडर्न सोसाइटी में हम अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ये सब तो विजिबल है, लेकिन बाकी सब चीज़ें भी आई वुड से वी आर गेटिंग एडिक्टेड टू इट। द सोशल मीडिया वैलिडेशन, हमने लाइक नहीं किया, हमने कुछ मिस कर दिया, सो वी आर मोस्टली ऑन द फोन और जो भी हमारे गैजेट्स हैं उन पर। सो दैट हैज़ टू बी चेक समवेयर, इट हैज़ टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन, वाई प्रायोरिटीज, what is more important for us. So these how it has to be classified and categorized.
सो व्हेन पीपल गेट इनटू एडिक्शन तो उनके दिमाग में सिर्फ एस्केपिज्म ही एक मोटिव होता है या फिर और भी हिडन मोटिव्स होते हैं? इज इट समथिंग मोर डीप? एस्केप, डीप मोटिवेशन, ये सब आई डू अग्री, ऐसा रहता है, लेकिन understanding, where there is lack of understanding, we don't understand what the problem is, the underlying problem. If we don't understand, then there is escape. We do agree, and there are many more things, because कोई भी एडिक्शन है, वेदर इट्स सब्सटेंस अब्यूज और डिजिटल टॉक्सिफिकेशन, ये हमें कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन वायरिंग को डिस्टर्ब करता है, हमारी केमिस्ट्री को, ब्रेन केमिस्ट्री को, बिकॉज वी हैव हैप्पी हार्मोन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन, सो दे आर सपोज टू बी हैप्पी हार्मोन्स। उसे हम फॉर द टाइम बीइंग एनहांस करने के लिए ये सब चीज़ों का सहारा लेते हैं, या हम इस तरफ जाते हैं। सो इस टेम्परेरी प्लेजर के लिए या टेम्परेरी रिलीफ के लिए फ्रॉम पेन और ट्रॉमा, वॉट एवर द कॉज इज, उसके लिए हम इन चीज़ों को, तो देयर इज मच मोर देन व्हाट इज बीइंग लाइक, यू नो। सो इसे हम मिलकर सब, यू नो, दोज हु आर क्लोज वंस एंड डियर वंस एंड द फैमिली एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग दैट काउंट्स अ लॉट, उसे हमें इसमें देखना चाहिए। एस्केप एंड दे बोथ आर देयर, ऑफ कोर्स, आई डू अग्री विद दैट। बिफोर वी गेट इनटू कि आप कैसे लोगों को रिलीफ पहुंचाते हो, आई वुड लव टू नो कि आप कब से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव डन टुवर्ड्स दिस। As I said, I belong to a value-based family tradition, right? So it was prevailing in our country for centuries. I would say Vedic culture where I belong to. So we have a specific pattern, and you know, everything which we are losing nowadays. So as I have been grown up with these values, I have seen practicing my elders. I have been practicing, and I have been a successful person or professional, you may call. So I tried these values, support system, environment, creating environment like this. Just give you an example, a brief about my work. Because people, we still have myth and stigma, like, you know, if we talk about mental health or addiction or something like that, people would consider, if you go for the help to the professionals, say like psychologist or psychiatrist, people would say पागल हो गया दिखता है, ये वहाँ हेल्प के लिए गया है। So because of this stigma, generally people don't seek help, or they talk about it. So we thought of making it in a different terminology. We started with rap. Raps, it sounds like music. So it is our Rajasthan Addiction Prevention Program. We started with that. And we started connecting campaign. That is, connect campaign to connect with people of different groups, say like adolescent through schools, and of course youth with school and college and universities. We started running free health checkup camp in the community to have their problems, so that people can talk about it, because the lifestyle disorders, again, there's mental health issues. A lifestyle disorder has things where people cannot talk about, and anxiety, stress, depression, these are incorporated with it. सो हमने कोशिश ये की कि हम कुछ वॉलंटियर्स जो यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को, उनके टीचर्स के साथ हम कम्युनिटी में हेल्थ चेकअप कैंप के बहाने से हम गए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ टू बी डन इज़ टू लिसन देम. They should talk about their feelings, their emotions, or their physical ailments, whatever is prevailing with them. So हमारी कोशिश ये रही कि हम उनसे सारी, वो अपनी बात कह सकें. This is the right place where they can talk about, they'll be listened, they'll be understood, and हम accordingly उसमें उनको जो help कर सकते हैं वो हमने help की. As like I'm a homeopath, so homeopathic medicines are really they create wonders, and they are wonderful. Without getting dependent on them, we help those people. This is what we do in this. So homeopathy can help remove or मतलब कुछ लेवल तक एडिक्शन को कम किया जा सकता है थ्रू होम्योपैथी?
Actually, addiction is a complex mental disorder, I would say. So this complexity is to be rectified through listening them, talking about it. So homeopathy, the basis of homeopathy is to listen to the patient, and we consider a patient or a person, individual. There's no comparison. There won't be two persons alike. So if we have to treat a person, we treat him as an individualized and with a holistic approach. Consider him as a whole. So we पे मोर एम्फोसिस ऑन जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं या मेंटल, जैसे हमारी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, ये जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टर्म्स हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. फील क्या कर रहे हैं, जुकाम भी हो रही है लेकिन फील क्या कर रहे हैं आपको सिम्टम्स क्या हैं. योर कोराइजा और योर कोल्ड मे बी डिफरेंट फ्रॉम हर एंड इट इज़ ऑलवेज. सो उसमें हम इस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं. इससे हम उनको पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं, हम कनेक्ट हो सकते हैं, हम उनको इस तरह से हेल्प करते हैं. सो होम्योपैथी इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया बिफोर गोइंग टू एनी साइकियाट्रिस्ट. दैट्स व्हाट आई फील. So all this works under Gyan Sanjeevni. Gyan Sanjeevni. Yeah, we named it Gyan Sanjeevni. Gyan, make awareness. We talk about these topics and subjects in a subtle way, and we convey all the informations to the different part of the community. Say like बच्चों को, बड़ों के लिए, adolescents के लिए, elderlies के लिए भी. वुमेन है, वो कम्युनिटी का वो हिस्सा है जहाँ वो बहुत सुनी ही नहीं जाती है, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए किसी को समझाना भी बहुत मुश्किल है. सो आई हैव दैट एडवांटेज बीइंग अ फीमेल एट दिस एज. आई होल्ड ऑल द रिलेशन, सो आई कैन अंडरस्टैंड बेटर और जो हम उनके लिए अच्छा कर सकते हैं. At the same time, we have a volunteer team. We educate students and help them, rather they help us as a volunteer to run this campaign. So addiction, as you said, कि lack of understanding की वजह से हो सकता है, but I feel like आज के टाइम में peer pressure is also one major aspect जिसकी वजह से लोग addiction को cool समझ के उसमें enter हो जाते हैं, be it substances etc. And this question, a wonderful question, and I would really like to answer it because where I have been grown up, in the environment, in the family, in there was no such pressure. Now people do, but if you are raised with values, our traditions and everything, you won't get this peer pressure. As I have been into rural area as well as cosmopolitan city like Mumbai. I have been studied there. My father, he was a cardiovascular surgeon. He stayed in US for 5 years for his FRCS. But we never experienced it because we were raised with our values, and they prevailed and they helped us to take no such pressures which is not required. So initially, what I would really suggest, kids, those who are around you in your family, take care of those kids, give them these values and see the difference. When they grow with these values, definitely they will not have such kind of pressure. There must be something lacking which didn't give them support, which we, at the point where they needed us the most, we could not support them. जब बच्चे को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय हम उसके लिए अवेलेबल हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. चाहे हम फैमिली में कितने रिलेशंस होल्ड करते हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं और मेनी पीपल अराउंड देम, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है. एंड देन सी द डिफरेंस. दिस इज़ व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग नाउ डेज. हम बच्चों के साथ, हम एडोलेसेंट जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं, हम उनके साथ इसी तरह से उनका जहाँ टेस्ट है, जहाँ उनका इंटरेस्ट है, हमारे कैंप्स में जो हेल्थ चेकअप कैंप्स करते हैं, तब हमें सिर्फ उन्हें सुनते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ साथ, जस्ट आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. अ फीमेल, शी हैड अ वेरी माइनर प्रॉब्लम, समथिंग रिलेटेड टू हर फिजिकल हेल्थ, पर उसके साथ साथ उसने बोला कि मैम आप मेरे फादर की शराब पीने की आदत छुड़वा सकते हैं क्या? So this is how, kids are observant, they observe everything, and this is how they seek help. So हम उस समय अगर उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं, तो आगे फ्यूचर में कोपिंग स्किल्स, छोटी छोटी कोपिंग स्किल्स हैं जो हमारे साथ साथ रहते रहते ही बच्चे सीख जाते हैं.
अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माय टाइम, आई वाज़ रेज़्ड विथ माय ग्रैंडपेरेंट्स। सो उनके साथ-साथ हमें छोटी-छोटी चीज़ों को कैसे कोप अप करना है। अच्छा गिर गए कोई बात नहीं, आप मार्क्स कम आए कोई बात नहीं। सो ये जिस तरह से उन्होंने हमें बड़ा किया, जिस तरह से हमें एनवायरनमेंट दिया, सपोर्ट किया, इस तरह का सपोर्ट सिस्टम इफ वी हैव इन आवर फैमिली, इन आवर सराउंडिंग विद द लव्ड वन्स, सो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं। सो दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन प्रिवेंशन ऑफ इट। बच्चे को इस तरफ जाना ना पड़े, वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी में काम कर सके, ये हमारी कोशिश है। इसके लिए हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए और पेरेंट्स, टीचर्स एंड चाइल्ड इन तीनों के साथ हम इस तरह से काम कर रहे हैं जिससे हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिले हैं। टीचर्स बिकॉज अगर 14 इयर्स बच्चा एक साथ एक स्कूल में पढ़ रहा है तो टीचर्स की नोटिस में रहता है। जिस तरह से वो ग्रो हो रहा है टीचर्स को सब पता होता है, आइडिया होता है हर बच्चे के बारे में। इस क्लास में अगर कोई और टीचर तो अगली क्लास में दूसरी होंगी, लेकिन ही इज बीइंग वॉच्ड, ऑब्जर्व्ड, तो वो हेल्प करते हैं पेरेंट्स और बच्चा भी मोटिवेटेड। रिसेंटली मैंने भी न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें एक बैलेट बॉक्सेस बनाए थे, एनोनिमस बैलेट बॉक्सेस इन द स्कूल्स। सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे चिट्स कुछ भी अंदर डाल सकते हैं, व्हाटएवर दे लाइक अबाउट स्कूल और दे डोंट लाइक अबाउट। तो वन और टू किड्स रिटन द सेम थिंग कि मेरे पापा ऐसे ऐसे ड्रिंक करते हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, व्हाटएवर, एंड दे ऑब्जर्व इट। और वो टीचर्स ने पढ़ा भी, देन दे रियलाइज दैट दिस सिस्टम इज एक्चुअली गुड, वेयर किड्स कैन talk to their parents, express themselves anonymously, and they maybe something could happen. कुछ बच्चों ने नाम लिखा था, तो वो पेरेंट्स डायरेक्टली बात कर सकते हैं टीचर्स से एंड ऑल दैट। तो मुझे पूछना था कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ एज हम शायद प्रेजुडिस या दिमाग से इतने फुल हो जाते हैं कि हम वापस जाने का नहीं सोचते, लाइक लीविंग एडिक्शन। किड्स तो ठीक है कि हम उन्हें नरिश कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द अडल्ट्स जो इसमें पूरी तरीके से घुस गए हैं? हाउ कैन दे कम बैक फ्रॉम द पोजीशन दे आर? It's a reversal process. They can come at any point of time. With few terms, I would like to explain addictions. We start with use. See, as you said, peer pressure sometimes. Why don't you try it? And we tried it. So that doesn't become addiction. It's just a use. And over the period, if you don't practice it again, you don't realize, like you don't feel like having it again. Then if you go repeatedly with it, then it becomes misuse. Smoking and tea, coffee, everything is like, we get dependent, and where at the point where we cannot withdraw ourselves with misuse, it becomes abuse. You get dependent, you have craving, and this is how it builds up: use, misuse, abuse, and then you get addicted. So before, if you are at any of these stages, you can easily come out. And if you are addicted also, we have rehab centers, we have therapists, we have support system, and many ways we can help them out. We have to realize and make him realize, our dear ones, and sympathy is not required. Empathy is required to understand them, to feel them. So in a comprehensive way, we have to work it on, and we can withdraw from at any stages. We have complete medical system and support system and everything, family system, environment, everything. That you have to make him, the person, realize and listen to him where the root cause is, realize that, and to eliminate with the root cause, whatever is required can be introduced. We have a whole wide system. We have national mental health program, which is comprising of de-addiction also. The Social Justice Department of Social Justice, Government of India, they have a scheme in that we have support system, making awareness, health centers, rehab centers, so we can seek help and we can be free from addiction. So you just spoke about therapists, rehab centers, detoxification. So how can we know what would work for us and what is a very powerful yet a very underrated method of de-addiction? See, you have to go and see a professional initially, at what stage we are and where are we, what is really required.
Professional would be the first one, the best one to guide you, like what is required. See, it a comprehensive way. You have to be collectively, we have to work collectively on it, but to have a diagnosis. See, suppose if we have any physical ailment, we go to a specified doctor, like if we have gastric problems, so we go to gastroenterologist. If we have something related to respiratory, we go to respiratory doctors. In the same way, if we have mental issues or emotional or anything related to psychology, then we go to psychologist and psychiatrist and get the proper diagnosis and what therapy or what treatment is required. He will guide us, and then we have wide world open for it. But the best thing would be the loved ones, those who are close to you. They should understand you. They should be empathetic. They can help you out the best. It's only that what we have missed is we misunderstood him or we haven't understood him. So from there we can start it again, help with all the areas, like, whichever we work with other, say, as you said, like, which is not, our approach is still not have been introduced very well. Value-based treatment, we have to be incorporated. Say, for example, we have been taught with Bhagavad Gita, samatvam, equality. So, samatvam yoga uchyate. This is what Bhagavad Gita says in second chapter. So, these are the things. We already have scriptures, we have tradition, we have everything, values. India has been I would say, a guru to the world. So we have Vedas and so many which are till this date is helping us, help us out, So this has to be also taken into consideration along with the therapy and treatment. पर परिवार वालों को कैसे पता चलेगा कि बच्चा इस चीज में जा रहा है, या व्हाट आर द फर्स्ट इनिशियल साइंस कि फैमिली को समझ आ जाए कि चाइल्ड इज गोइंग ऑन अ रॉन्ग वे और हमें उसे अच्छे से समझाना है रादर देन उसको डांटना है? एग्जैक्टली इसमें कुछ एक सिम्टम्स हैं जो इनिशियली रिवील होते हैं. सबसे पहले उसका बिहेवियर चेंजेस, थोड़ा सा जो बहुत अटेंटिव रहा है, जो डिसिप्लिन रहा है, उसमें डेविएशन होगा, वो इग्नोर करना शुरू करेगा, हम जो कह रहे हैं उसको मानेगा नहीं, अलूफ रहना चाहेगा, छुप छुप के रहना चाहेगा, बाथरूम में ज़्यादा टाइम लगाएगा. सो दीज आर द थिंग्स. यहाँ से इस तरह से सिम्टम शुरू. बिहेवियर में इरिटेबल रहेगा, बैक आंसर करेगा, हम जो कह रहे हैं वो नहीं मानेगा. वेर इज पहले, इससे पहले ऐसा सब नहीं होता रहा, बच्चा डिसिप्लिन रहा. और वहाँ से जहाँ डेविएशन शुरू होता है, बच्चे की जो नेचुरल पर्सनालिटी है, जिस तरह का वो है, फैमिली मदर सबसे पहले सेंस करती है. तो वहाँ से उसका जो डेविएशन शुरू होता है, वहाँ से शुरू होता है. स्टार्ट ऑब्जर्विंग, बात करना शुरू कीजिए. जितना ज़्यादा उससे खुलकर बात करेंगे, स्कूल की सारी बातें आकर अगर कर रहा है बच्चा, तो वहाँ से आपको कहीं ना कहीं क्लू मिल जाएगा, किसी न किसी बच्चे ने प्रेशर डाला होगा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय ग्रैंड चाइल्ड. वो हिज इन यूके नाउ, और वो ही वॉज अराउंड 8 और 9 years. तो उस पे बच्चों का प्रेशर था कि आप हमारी प्रैक्टिसेस कीजिए, अदरवाइज हम आपके साथ नहीं खेलेंगे. वहाँ से ही वो थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगा, खाना कम खाने लगा, चुप चुप रहता था, बताता नहीं था. तो 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐसे निकले. उसके बाद उसने पोस्चर चेंज किया अपने बैठने का. तो उसके मदर को ये डिफरेंट ऑब्जर्व तो कर ही रही थी, लेकिन उसको लगा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है. तो उससे बात जब की, तो 1 दिन नहीं बोला, 2 दिन बाद, दिन उससे रहा ही नहीं गया बच्चा किसी न किसी से बात करने के लिए. तो उसने बताया कि मेरे साथ बच्चे खेलते नहीं हैं और वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं उनकी प्रैक्टिसेस करूं और अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ दूं, तो जो मुझसे नहीं होगा. सो शी कुड मेक आउट लाइक हियर द प्रेशर इज, ही हैज़ टू बी आउट ऑफ दिस प्रेशर. उन्होंने थोड़ा उसको अलग किया. यू बी फर्म, यू बी डिटर्मिन. धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस कराते कराते उसको ना बोलना है गलत बात के लिए, तो उसमें कॉन्फिडेंस आया. और इस तरह से तो हर बच्चे के साथ हम इजीली कर सकते हैं. औरों के साथ भी हमने ये कोशिश की है, एंड दैट रियली वर्कड.
सो सबसे पहले तो उनकी डेविएशन को चेक करने की ज़रूरत है, कहाँ जा रहा। यहाँ वेरी सॉरी टू से दैट पेरेंट्स दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन। वो अपने उसमें, सो व्हाट इज़ देयर प्रायोरिटी। हमारे यहाँ इनिशियली मदर्स हैं, आई रिमेम्बर माई मदर, उसका फुल टाइम जॉब सिर्फ हमारे लिए होता था, नर्चरिंग अस, यू नो, giving us guidance, what is to be done, what is right and what is wrong. So in our tradition families, it was being taught right from the beginning. Abhi parents, they don't have time for children, whereas they are spending a lot of money, they are giving them facilities with gadgets they are providing, but where is the time? They don't spend time with children. So this is what things has to be taken into consideration. You said about both the parents are working और चाइल्ड को या तो क्रैश में छोड़ देते हैं या फिर दे कीप सम आई और समथिंग आया फॉर द किड्स, बट ये बड़ा डिबेटेबल सा क्वेश्चन है कि शुड मदर्स गिव अप देयर जॉब फॉर सम टाइम फॉर देयर किड्स, और हाउ शुड दे बैलेंस आउट थिंग्स विद देयर किड? See, it is not required. They shouldn't give up their jobs or anything of their responsibility, what they are talented for. बच्चों के लिए जो आप 24 आवर्स में बच्चों के साथ थोड़ा टाइम भी, एंड बच्चों को सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि वेर एवर द पेरेंट्स आर नीडेड, वी आर ऑलवेज देयर. You do your work, this is your time, this is my time, and they do realize, I've been a professional, my kids have been doing it, they are into very well now, but I always made it a point कि you are my first priority, wherever you need me or whenever you need me, I'll be there. And they have started, like, you know, when I was working, we could manage the time. This is the time when we can spend together, we'll go together, we'll eat together. So maybe few minutes, but we could do that. So even parents can make these arrangements. But while working also, they can have a conversation. We have phone now, WhatsApp chatting or wherever. So the child should have this confidence that my parents are always there. Whatever I do, they are always there for me. Instead of like, you know, firing them, or I would say, like, you know, listen to them and show them the way, like, you know, what is to be done. बच्चों को हम उनकी बात को समझकर, जहाँ वो गलत जा भी रहे हैं, पर उनके साथ हमारे शेयरिंग, हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए. बच्चों को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स है या मेरी फैमिली है या मेरे फ्रेंड्स हैं, जहाँ मैं खुलकर बात कर सकता हूँ और वो मुझे सही समझेंगे, मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे. तो उसमें ये कॉन्फिडेंस होना एक बहुत बड़ी बात है. आई थिंक जॉइंट फैमिली कल्चर इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड, माय मदर, I used to be at my place, but whenever my mother or my grandmother, they were busy, they used to send me to a neighbor. So even that was a very good bonding. So I think that bond is missing between people, between neighbors, and also between families. We are more into nuclear families now. You are absolutely right. This is what we have experienced, and that has given us the strength to fight against odd. अब बच्चों को हमें उतना सा ही तो देना है. They, I mean, where do they have time? They have even limited, like, you know, so many activities has been introduced. They have wide options nowadays. But जो भी टाइम है उसमें हम एक टाइम को इंसाइड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने नेबर में, जहाँ भी जिस भी रिलेशन को, सी सपोज न्यूक्लियर फैमिली है, आई वुड से सिंगल मदर भी हैं तो भी इट कैन बी इजीली डन, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर हमारे यहाँ जो स्टिग्मास हैं, जो मिसबिलीव्स हैं, उन सबको हमें उसके अगेंस्ट अवेयरनेस कैंपेनिंग करने की ज़रूरत है, एंड वर्क टुगेदर. दैट्स व्हाट आई फील. When we come back to the conversation of substance abuse, तो एक person who is addicted, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? When person is addicted, उसका अपना माइंड ही नहीं रहता है, because the substance has distorted the chemistry. The normal chemistry is no more there. बीच में कभी रिवाइव करता है, कभी नहीं करता है, तो वो अपने उससे कर ही नहीं रहा है. सो हमें उसे हेल्प करके उसकी केमिस्ट्री को नॉर्मलाइज करने के लिए कोशिश करने देनी है. ही कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर हिज स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज सब्सटेंस जो भी है, से सपोज अल्कोहल भी लिया है, तो अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में लिया है तो इंटॉक्सिकेट तो करेगा ही ब्रेन को. सो ब्रेन उसकी उस समय जो क्वारल हुई है घर में या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो व्हाट सेंस डज इट मेक, बिकॉज वो तो अपने सेंसेस में ही नहीं है. द नेक्स्ट डे व्हेन ही रियलाइजेस, जब उसका वो सब कम होगा तो उसे समझ आएगा कि आई हैव डन रॉन्ग. तो उस ड्यूरेशन में तो हिज माइंड इज नॉट हिज, आई मीन ही कैन नॉट एनालाइज, ही कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, ही कैन नॉट बी लॉजिस्टिक.
सो उस समय ब्रेन उसका होता ही नहीं है। तो हमें उससे बाहर निकालने के लिए सारे एफर्ट्स करने हैं, धीरे-धीरे से रियलाइज़ कराना है और ग्रेजुअली इट हैपेंस, यू हैव टू बी पेशेंट, ग्रेजुअली, बट इट कैन हैपन। नॉर्मल जो था पहले से, उससे भी ज़्यादा अच्छा नॉर्मल हो सकता है। So, you just said कि somebody who's addicted, उन्हें gradually उस चीज़ से बाहर निकालना चाहिए. At times, I've heard people saying that you can't just leave the substance you are addicted to. You can reduce the quantity day by day, but not completely just throw it away, remove it from your life. So if it is a substance abuse, if we are talking about substance abuse, then we have professionals. It should be into their able guidance. We rehab centers, or we admitted, say suppose smack or weed, whatever we are addicted to. So it takes time, say about 10 to 15 days, because there will be withdrawal symptoms. As soon as you reduce the quantity or you withdraw the substance, you will be having withdrawal symptoms. You won't be able to cope up with that because your body is not that competent enough to take care of. सो विड्रॉल सिम्टम्स को कोप करने के लिए हमें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेकर उनके सुपरविजन में ये करना चाहिए, एंड देन ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस रेस्ट ऑफ द थेरेपीज और रेस्ट ऑफ द मोड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट. तो इनिशियली तो हमें इस तरह से करने की ज़रूरत है ही, और वो करना ही चाहिए, और देयर इज़ नो शेम, देयर इज़ नो गिल्ट, ये सब नहीं आने देना है. आप उनका सपोर्ट सिस्टम, हुएवर द क्लोज वंस आर, जो भी उनकी नियरेस्ट फैमिली है या फ्रेंड्स हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं और उसकी हेल्प करना चाहते हैं, दे शुड स्टैंड बाय, उसे सुने, समझें और उसकी हेल्प करें. प्रोफेशनल्स की हेल्प सीख लीजिए. हमारे यहाँ हर पीएचसी पर डॉक्टर्स को ट्रेन किया गया, जो साइकाट्री में नहीं भी स्पेशलाइज्ड हैं, उन डॉक्टर्स को नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में उनको ट्रेन किया गया है, और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ टू इनिशियली स्टार्ट विद दिस ट्रीटमेंट, और फिर सुपर जो स्पेशलाइज्ड हैं या सुपर स्पेशलाइज्ड हैं उनके सुपरविजन में. और हमारे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी हैव ऑल एवरीवेयर, यू कैन आस्क फॉर एनी हेल्प. आप किसी से भी इस तरह की हेल्प ले सकते हैं. दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, और पेड तो है ही उसके अलावा, लेकिन आपको जाकर हेल्प लेनी ही है. दैट इज़ द बेस्ट वे टू बिल्ड अप. recurrence ना हो, relapse ना हो, उसके लिए. For example, there is somebody in a family who has a set time period of having a drink or anything, alcohol consumption. Will that come under addiction? Because just in case if you don't provide him the substance, he won't get frustrated, but that is a set time period. For example, even we have seen in Bollywood movies, the male of the families, they sit, they relax, they have a glass of whatever, alcohol, anything. So will that come under addiction? See, as long as it's not harming anybody, this won't be like, he is addicted, his body is coping without it, then it's not an addiction. If body can cope up with, I'm used to having tea, I'm addicted to tea, I need tea, 5 times a day tea, and if I don't get tea, I get headache, this is kind of addiction also. So without alcohol, if it does, his body can cope up with it, it can survive with it, and he doesn't have any problem, or he doesn't create any problem in the family, he's not, he can continue with that. And if it is not harming his body, so like certain quantity of alcohol, it doesn't harm you much. But of course, it's directly taken up by the liver, so liver is getting damaged. So this is one thing. But addiction, if we go by the term, if it is not harming anybody or harming your body, or your body can cope up with it, or you can cope up with it, then it's not addiction. So since you're working for a very long time towards de-addiction program at grassroots level, तो ऐसा कोई fulfilling moment रहा है, या some story that has changed your perspective, or it felt like that you're doing the right thing? I would say this is the moment where I can express myself. You have given me the opportunity to convey my views and ideas and my work. This is the fulfilling moment. You realized it, you gave me the chance. So that's what I feel like, I've come so far. And this is the right question which you asked me, and I could convey it to people like me. It is an opportunity for us to have you here with us. So, like if I ask for some patient perspective, like yes. So I'll give you just brief about the work what we have been doing.
As I said, we started with rap. Then we connect campaign. Then when we go to schools or universities with the cultural program, that is Chaitanya Utsav, we motivate students, the youth, and to come up and do some volunteers with us or with their innovative ideas. So that is our Chaitanya Utsav. Then we have Spark Celebration. We provide school children with their cultural activities. We approach these students and children with cultural activities, say like art and craft, arranging planters, or of their choice, like, maybe sports, maybe something like, So we started working on a skit, a small skit to present on Spark Celebration on Jawahar Kala Kendra. It was a government school. They shortlisted 15 students of higher secondary school and they were practicing. So after performing, it came out very well. Everybody appreciated and it was replicated in Manipal University also. They got a standing ovation for that. So those 15 kids, after performing, they said, "Ma'am, we will never try any of these substances which make us addicted." So that was like, 15 students, if they could realize, and they promised me, and they said like, "We will not try." So that was a great achievement for me. If any, मतलब ये podcast देखने के बाद कोई एक जना भी अगर ऐसा feel करेगा ना, तो even our podcast will be fulfilled. Exactly, but I think masses, masses should follow us, and they should come forward. There is जो ऋग्वेद है उसकी आखिरी ऋचा है. It goes like संग छद्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम. मिलकर चलें, मिलकर सोचें और एक दूसरे की मन की बात को जानें. This is what the last richa of Rigved says, So, Nimin, I want you, everybody, to understand what we are trying to say here. Take up and join us, join hands together to fight this. Because it's basically demand and supply. We are demanding and the industry is getting developed, whether it's a substance abuse, whether smack or cocaine or whatever the industry is. Why it is growing? Because we are demanding. So we have to give it a check, work together, of course. So Government of India ka Nasha Mukt Bharat Abhiyan, this is what we are working with Government of Rajasthan के समाज कल्याण विभाग के साथ, and एक छोटी कोशिश चल रही है. ग्रेट कोशिश, छोटी कोशिश नहीं है. बट मैम, अगर कोई एडिक्ट है तो वो पर्सनल लेवल पे क्या कर सकता है बिफोर, मतलब कुछ होते हैं स्टिग्मा है, वी विल नॉट सीक एन हेल्प और एनीथिंग, तो पर्सनल लेवल पे वो अपने आप को कैसे डी एडिक्शन की तरफ लेके जा सकता है, एंड देन मूविंग टू अ रिहैब सेंटर और समथिंग, अगर उसको स्टिग्मा फील हो रहा है तो? सबसे पहले वो अपने क्लोज वन, जहाँ वो ट्रस्ट करता है, जिसको वो कंप्लीटली ट्रस्ट करता है, उससे सबके बारे में बात करें. देन ही विल टेक द इनिशिएटिव. ही डजंट हैव टू कम फॉरवर्ड इफ इज नॉट रेडी दैट वे. सो उनके साथ जो भी है, मे बी फ्रेंड और ब्रदर और सिस्टर, पेरेंट्स, वट एवर मे बी द रिलेशन, लेकिन अगर इतना जिसको वो कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ शेयर करके एक इनिशिएटिव लेने के लिए ही कैन गो एंड टॉक टू द प्रोफेशनल व्हाट इज टू बी डन. बहुत सी रेमेडीज हैं, बट एक बार बात करने की तो ज़रूरत है. किसी से भी, अपने सबसे ट्रस्टवर्दी, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, उनसे बात करें और उस हेल्प की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं. ही हैज़ टू स्पीक अप, और बाकी सारा हमारा सपोर्ट सिस्टम है, दैट विल हेल्प अस. So at last, for people who are feeling lost, what would you as Dr. Sadhana Sharma guide them? सी, इससे पहले भी सबने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा. ही इज़ नॉट द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस इट. और अगर वो लॉस्ट है तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू विथ दिस जर्नी. देयर मस्ट बी, वो चलते चलते अगर चलता रहा तो वहाँ उजाला भी होगा, से अपनी मंजिल भी मिलेगी. जस्ट कंटिन्यू विथ इट एंड उसमें एफर्ट्स करते रहें, अपने मंजिल जो भी है उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए. ही इज़ लॉस्ट बिकॉज देयर इज अ डार्कनेस. तो उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए उसे जर्नी कंटिन्यू करनी है और उजाला बाहर होगा. हम कहते हैं कि भोर से पहले सबसे ज़्यादा गहरा अंधेरा रहता है. सो इस तरह से आगे भोर ही होगी. ये शुड कंटिन्यू. हम सब साथ हैं.
So you should not give up. Thank you so much, ma'am. This was a very insightful conversation we had with you. So I would request everyone to please de-addict yourself, have some hope, give yourself some second chance, and live a life that you want to live. And thank you so much, ma'am. We are pleased to have you here and have this conversation. Same way, even I feel the same way. Thank you so much. And I really loved this session because I could convey a few things which I really wanted to. अब आपकी बारी है, हमें आगे आकर ज्वाइन करें और हेल्प करें हमारे इस मिशन में. थैंक यू.